And ethnic violence has plunged the state of Manipur into what many have dubbed as a state of civil war, as the two largest groups, the majority Meitei and minority Kuki, battle over land and influence. At least a dozen people have been killed and several wounded in the violence that began way back in May. Meanwhile, Republic is on ground zero and getting you all the updates from various violence-hit areas. Take a look at all the details. It's been 80 days. Manipur continues to be on the edge. Several have been killed, even more left injured. Thousands forced to flee. Schools and houses gutted. What remains at the Children's Treasure High School in Torbung are some remains of the textbooks which were inside this building. Last night at around 6:30, a mob came into this village. They attacked the school. They set it on fire. Heavy firing of several rounds of ammunition also took place in this area. The fire was so big that it engulfed anything and everything that was inside this building. You can also see one cylinder lying here. This was probably a small cylinder which also went off when this school building was set on fire. All the dreams of hundreds of students shattered. Now what remains are some leftover pages of the textbooks which were inside this building. On Sunday, fresh firing was reported in many areas in Churachandpur, the epicenter of violence. मणिपुर में हालात तनावपूर्ण है और इसी बीच लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए, क्योंकि सभी जो दोनों ही संप्रदाय के लोग हैं उन्हें अलग अलग कैंप्स में रखा गया है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बेहद तेजी के साथ यहाँ पर चल रहा है। मुकेश, थोड़ा तस्वीरें यहाँ पर दिखा दीजिए। और आप ये देखिए, सिर्फ 8 ही दिन यहाँ पर हुए हैं जो हमें जानकारी मिली है, जिसके बाद ये कंस्ट्रक्शन बेहद रफ्तार के साथ, बेहद तेजी के साथ यहाँ पर चल रहा है। Several checkpoints have been formed at multiple locations. Women and men guarded 24/7. The situation continues to remain tense in Churachandpur, in Kangpokpi, in Impal, in Bishnupur, in Thaubal, and many parts of Manipur. And that is the reason why such checkposts are now very common. The curfew time is also mentioned. 6 p.m. to 4 a.m. is the curfew time, and from 5 a.m. to 6 p.m. the women volunteers do their duty here, and from 6 p.m. to 5 a.m. in the morning the male volunteers come. बंकर बनाए हुए हैं यहाँ पर। आप लोग कब से इस तरह से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? कब से? जब से ये वायलेंस शुरू है तब से। मतलब साल मई से ही ऐसे ड्यूटी? नहीं, मई के बाद। मई के अंदर में ही है, लेकिन जिस दिन शुरू है उसी दिन तो बना नहीं है, कुछ हफ्तों के बाद बना है। कुछ हफ्तों के बाद बना है। अच्छा। हालत अभी भी काफी नाजुक है यहाँ पर। कल भी फायरिंग हुआ है, स्कूल एक जला दिया गया है। स्कूल किसने जलाया है यहाँ पर? हमेशा है कि जैसे पहले से होता जा रहा है, मेइतेई लिपुन और अरम्बाई तेंगर, और उनके आगे जो फोर्स आता है वो हमेशा कमांडो रहता है। उन लोग कमांडो पहला आता है, जैसे कि हम लोग थोड़ा बैक हो जाता है तो मेइतेई लिपुन और अरम्बाई तेंगोल उन लोग को आगे भेजा जाता है। तब उन लोग ने स्कूल जलाना शुरू किया है। The DCW chief is in Manipur, spoke to the victims of violence.
I have met a lot of Manipuri ladies from Manipur who have run away after the violence and have reached Delhi. I am in constant touch with them and they are requesting that I should come to Manipur and I should see the condition because their family members are also here. Also, I am trying to meet the Chief Minister right now, and this is also one discussion that I will be having, that what can we jointly do in order to make sure that they remain safe in Delhi, and how do we rehabilitate them as well as the sexual assault survivors here. As Manipur continues to be on the boil, there is tight vigil at borders to avoid any untoward incidents. मणिपुर के थौवाल इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो आर्मी सपोर्ट यहां पर भेजा जा रहा था उनको स्थानीय महिलाओं ने घेर लिया। उसके बाद अब ये सारी गाड़ियां आप देखेंगे कि आर्मी सपोर्ट की वापस लौटती हुई आपको नजर आ जाएंगी। यू टर्न लिया जा रहा है। मैं अपने वीडियो को कहूँगा थोड़ा जूम करके अगर आपको तस्वीरें आगे दिखाने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे कि महिलाएं बड़ी संख्या में आगे इकट्ठी हुई थी। ये जो काफिला है थौवाल से आगे जा रहा था और सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उन्हीं पहाड़ियों में बंकर्स बनाए गए हैं। लोगों ने इस इलाके में बंकर्स बनाए हैं, लेकिन जब आर्मी सपोर्ट इस इलाके में भेजा जा रहा था तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि वो सारी गाड़ियों को अब यू टर्न यहाँ से कराया जा रहा है और जो आर्मी सपोर्ट आगे थौवाल की तरफ जाना था वो अब वापस हो रहा है। आप देखेंगे कि जो बस है आर्मी की उसको वापस यू टर्न लिया जा रहा है और आप जूम करके देखेंगे तो आगे बड़ी संख्या में आपको महिलाएं खड़ी नजर आ जाएंगी। इस तरीके की तस्वीरें लगातार मणिपुर से सामने आ रही हैं जब हम देख रहे हैं कि जहां पर आर्मी सपोर्ट भेजा जाता है वहां पर महिलाएं विरोध करना शुरू कर देती हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि वो आगे इस सपोर्ट को नहीं जाने देंगी और ऐसी तस्वीर हमें थौवाल इलाके में देखने को मिल रही है। आप ये देखेंगे सभी जो आर्मी सपोर्ट के ट्रक हैं वो वापस अब यू टर्न ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टीवी।